वे चाहते थे कि तभी उम्मीदवार बनूंगा जब आम सहमति बने। कांग्रेस ने उनकी जगह प्रतिभा पाटिल को उतारने का फैसला किया और कलाम साहब अपना 2 सीट के लिए राष्ट्रपति भवन छोड़ गए। उनके कार्यकाल के अंतिम महीने में रामनाथ गोयनका पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया गया। पुरस्कार के बाद मंच पर इस बात को लेकर बहस होने लगी कि क्या अच्छी पत्रकारिता बुरा व्यवसाय है। इस बहस का नतीजा आज तक नहीं निकला और ना निकलेगा, लेकिन चर्चा के बीच से जब राष्ट्रपति जाने लगे तो राजदीप ने सलाम किया और बाय बाय सर, तो बरखा ने कहा कि राष्ट्रपति जी एन राम आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं, सुनते जाइए। बस राष्ट्रपति लौटते हैं और मंच पर आधी पालथी मारकर बैठ जाते हैं। एन राम और उनके बीच बहस होती है कि विकास क्या हो, इसके लेकर कभी एक नजरिया नहीं हो सकता। कलाम यह कहकर चलते बने कि इस पर जरूर बहस कीजिए, पर ध्यान रखिए कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से कैसे ऊपर लाया जाए। बात क्या हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, एक राष्ट्रपति का इस तरह फर्श पर बैठ जाना सबको हैरान कर गया था। You've made use the word which many believe is the future for the success of the media, to be aspirational. Thank you, sir. May I say something before the President leaves? Yes. Sir, he wants to respond. Just one thing in response to your question or the challenge really. It depends on what nation building is. I agree there must be a constructive role for the press, but let's take a concrete example. You have supported nuclear weapons. I am dead opposed to India's nuclear weaponization. Mr. Advani considers the building a Ram temple as a nationalist project. I think it's a highly divisive project. Now, so it depends on what your perception is, what your standpoint is, what your worldview is. Somebody will say building democracy in Iraq the way Bush and Blair have gone about it is good for the world. We are dead opposed to it. So you can't agree on these things and participate and not be critical or even opposition. No, Mr. Ram, I don't want to take any of your agenda. You got an agenda, you are meeting, okay? Yeah. But the agenda, what I suggest, that you can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up? How do you bring them up? So that is the agenda. There may be many development going on agriculture to any subject, but agenda is very clear. 220 million people are below poverty, 22% of the people below poverty line. How do you lift them up? What contribution do you make? That's the issue. That's the issue. Yes. But sir, they don't even read newspapers, they don't watch TV. No, I agree with the President. These are the people who are outside the ambit of television. No, covering deprivation. President, I think the problem is there's no one definition of what nation building should be. No, there isn't agreement. I can use the definition, and I have talked in Parliament also. Give it to us, sir. What is it? What is it? See, You tell us what is your... I tell you, One agenda. because if you want the development of the nation, economic development of the nation is not the end of it. I have defined National Prosperity Index equal to A plus B plus C. A equal to GDP, growth, that is economic development. B is 220 million people. How we are lifting up every year, do we reduce the people below poverty line? Third one, nobody talked about, that's value system. Value system comes from 200 million people, 200 million houses are there. How many houses are joint family? How many of you like joint family system? Lift your hand. How many of you like the joint? You see, so you promote such type of thing. Thank you. Thank you. You have to get up. यह भी एक कमाल का लम्हा था कि जब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति फर्श पर बैठ गए और पत्रकारों से देश और देश के विकास को लेकर बहस करने लगते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के कुछ चरम बिंदु हैं जिन्हें देखकर कभी कभी गर्व होता है और कभी कभी डर लगता है कि ये ना होंगे तो कैसा देश होगा हमारा। लेकिन 2002 में इनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला था। 2007 तक आते आते मेरी भी जिंदगी काफी बदल गई। आप सब ने इनकी स्मृतियों को साझा किया है, तस्वीरों को साझा किया है, तो मैं भी अपनी एक इस तस्वीर को आपके साथ साझा कर रहा हूं और चलते चलते विदा लेता हूं आप सबको। इस कलाम को आपके साथ छोड़े जा रहा हूं।